day in India today. An interim budget was passed, the last budget before the upcoming general election, which is why it's an interim budget. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बताया था कि 1 फरवरी 2024 को हमारे इस साल 2024-25 वर्ष का जो अंतरिम बजट है वो जारी हो चुका है। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बताया था कि 1 साल पहले 2023 में कि जो ये वर्ष आने वाला है, अब से लेकर 2047 तक, ये वर्ष स्वर्णिम काल यानी गोल्डन टाइम जो भारत का चल रहा है वो गोल्डन टाइम चल रहा है। This budget also sets the tone for what lies ahead. It outlines policy priorities, areas where money will be allocated, and schemes that will shape India's growth story. Slamming the union budget, saying that it's only going to increase inflation. Election के लिए income tax का relief मिला है, बाकी कुछ नहीं. There is a weakness in the budget. There was no mention of NREGA. There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान. लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारे भारत का माहौल हालात देखते हुए हमें तो नहीं लगता गोल्डन टाइम चल रहा है, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री जी, सबके कहने पे हम देखते हैं उन्होंने बजट में बहुत कुछ जारी किया है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि बजट जारी होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट देखते हैं क्या क्या बजट में जारी हुआ है। जैसे कि उसमें बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया है, जैसे कि सोशल जस्टिस के बारे में, गरीब कल्याण, देश का कल्याण के बारे में, वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी द युवा। देख रहे हैं दोस्तों, युवा के बारे में कहीं भी दिया गया है। मोमेंटम ऑफ नारी शक्ति, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, मतलब जीडीपी के बारे में बताया गया है। दोस्तों आप लोगों को पता है जीडीपी कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में, ग्लोबल कंटेंट के बारे में, विजन ऑफ विकसित भारत के बारे में, स्ट्रैटेजी ऑफ अमृत काल के बारे में, पीएम आवास योजना और अन्य बहुत प्रकार की योजनाओं और सुविधाओं के बारे में इस बजट में जारी किया गया है, जिसमें कि दोस्तों अभी तक $5 ट्रिलियन का इस साल का रेवेन्यू दिखाया गया है और पिछले साल का 3 Talking point in every budget. Everyone wants to know this. How are tax slabs changing? Well, this time they're not. No change in taxes. Your present income tax slabs remain intact. So if your earning has not changed, you'll continue paying the same amount of tax. Over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their $5 ट्रिलियन रेवेन्यू दिखाया गया और आने वाले वर्षों में 2027 में $5 ट्रिलियन कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 2030 में $7 ट्रिलियन। तो दोस्तों आखिर ये $5 ट्रिलियन जो हम लोग का रेवेन्यू आया है इस साल का 2023 का, आखिर कहाँ खर्च हुआ है $5 ट्रिलियन? समझे, $5 ट्रिलियन मतलब 500 बिलियन डॉलर, समझे, सॉरी 15,000 बिलियन डॉलर, मतलब पता नहीं कहाँ खर्च कर दिए हैं। और देखिए भारत का हालात कितना है। अभी देश में देखे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले नंबर पे है, लेकिन इकोनॉमी की दृष्टि से देखो तो 13 नंबर पे है। बताइए दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में भारत की जो इकोनॉमिक जीडीपी रेट थी वो आ गई थी 4 नंबर पे, और यहाँ मोदी जी 10 साल से हैं तो वो आ गई है 14 नंबर पे। तो देखिए तो कितनी भारत की उन्नति हो रही, कितनी बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा तो कुछ अच्छे काम किए गए हैं जिनको हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते हैं। इंडियन न्यूज के ऑडिटर आदित्य गौतम ने बताया कि पुराने साल और नए साल के टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है दोस्तों। और इसी साथ प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी का तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट का जो पूर्ण अंतरिम बजट होगा वो जो नई सरकार आएगी वो लेकर आएगी। और इसी के साथ संसद में बजट पिछले महीने की अंतिम तारीख को राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बजट पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के ऐतिहासिक परिवर्तन और प्रगति के पूरी जांच करता है। इसी के साथ समाज में मुख्य स्तंभ पर जोर देते हुए मंत्री ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एजेंडों की आकार देने की
देने में भी किसानों, महिलाओं और युवाओं और वंचितों महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। और दोस्तों, इस बजट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी राहत नहीं मिली है। और निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि इस बजट में, अंतरिम बजट में, जो जीएसटी का था उसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें अमित शाह जी ने कहा कि सरकार पहले महिलाओं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पे ध्यान देने के लिए कह रही है। और इसी तरह G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इसमें जो मोस्ट सपोर्टिंग पिलर। और दोस्तों, इस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी 2023 और 2024 के बीच में जो $5 ट्रिलियन developed economy by 2047. They're calling this period the Kartavya Kal, meaning the time to fulfill your duty or kartavya and make India a developed economy in the next 23 years. It's an ambitious target to have, considering the many challenges along the way. Listen to this. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID. रेवेन्यू वो 2027 तक बढ़ के $7 ट्रिलियन तक रेवेन्यू हो जाएगा। और 2030 में जाते जाते यह $10 ट्रिलियन का रेवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने निर्मला सीतारमण को कहा कि यह बीजेपी का अंतरिम बजट है, क्योंकि ये जो लास्ट 2.0 बजट है, बिकॉज इसके बाद जो मोदी जी का पता नहीं जीते या नहीं जीते, उसके मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट अपना ओपिनियन देते हुए ये मैं कहना चाहता हूँ, बस मतलब कहना चाहता हूँ कि जो भी नई सरकार आएगी वो नया पूर्ण बजट जारी करेगी दोस्तों। और इसी के साथ एनडीटीवी के एडिटर चीफ संजय पुगलिया बजट को डिकोड करते हुए कहते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं और रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट चुनावों में ग्रुप्स के रूप में महिलाओं, गरीबों, किसान और युवाओं को ध्यान देते हुए यह कार्य करने के लिए खर्च करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़कियों को 9 से To spend on welfare. They're placing a big bet on disinvestment. And they've set a steep target of around $6 billion for this. This is how they'll make money. Highlight number 10, the special focus on women. The finance minister made multiple announcements targeted at women, like on the healthcare front. The government is expanding its universal healthcare scheme. Now, women healthcare workers at the grassroots will get health insurance. They want to encourage vaccination. Reports say the government is in talks to reduce costs for cervical cancer vaccines. They're also focusing on the financial well-being of women. There was an announcement to empower local self-help women groups. Their members are known as Lakpati Didis or Prosperous Sisters. They're encouraged to pool their resources and harness their skills to earn a minimum of 100,000 rupees every month. That's 1 lakh rupees, hence the term Lakpati Didi. The government will allocate more money to such groups, from $240,000 to $360,000. Prime Minister Modi spoke after the budget speech today, and he called the budget incisive and innovative. इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। So those were the key highlights of the interim budget 2024. साल के बीच की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन देने की कार्य की पूर्ति करे। और इसी के साथ राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार हमें देश भर में जो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करेगी। दोस्तों, इसी पर वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, जो हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, और सोशल जस्टिस के बारे में इस बजट में बताया गया है, जिसमें कि
मोमेंटेड ऑफ नारी शक्ति, वेलफेयर ऑफ अन्नदाता और गरीब कल्याण देश का कल्याण, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 6.25 लाख मतलब 6.25 लाख घर भारत में अन्य गरीबों को बनवाए जाएंगे और 8.35 लाख जो बाथरूम मतलब लैट्रिन है वो लोगों को प्रदान की जाएगी। और सोशल जस्टिस के मामले में अंतिम जो बजट आया है इसमें पूर्ण बजट आने के बाद इसमें घोषणा की जाएगी। और दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस यानी जीडीपी के बारे में जो पूर्ण बजट आएगा उसमें बताया जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। Pandemic. Highlight number 3, the government has specified its focus areas. It is paying attention to 4 groups: the poor, the women, the youth and the farmers. Policies are being crafted around these 4 groups to bring about their upliftment. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. And this was a recurring theme throughout the speech. Highlight number 4, the big achievements. Transferring benefits directly to people. The focus is on cutting distribution loss. And here is what the government says it has delivered. More than $110 million to farmers, over $260 billion in loans, and these have been given to 430 million people under the Mudra scheme. Now, these are special loans designed to serve small enterprises, companies that work at the grassroots levels. And like I said, the focus is on direct transfers by the government, eliminating middlemen. This has been mainstreamed. According to the budget, more than $400 billion have been deposited directly into the bank accounts of beneficiaries. This has put an end or minimized leakages and led to savings for the government. 7.8 million vendors have been given credit assistance. Women have been allocated houses under a central government scheme. 70% of all rural houses went to women. So those were the major achievements that the budget talked about. Highlight number 5, tackling multi-dimensional poverty. Now, usually we define poverty on the basis of money. We measure it on the basis of purchasing power, like how much money you earn or spend in a day. But that is just one dimension of poverty. It doesn't capture the full picture. People may feel poor due to a variety of reasons, like when they cannot afford basic necessities like electricity, food or water, when they are forced to pick an inferior school for their child, when they cannot afford proper treatment because of costs. There are many cases where one medical emergency can financially ruin a whole family. These are all different versions of poverty. These people may not be poor by the traditional definition, but they all experience poverty. So what the government is trying to do is this, trying to tackle multi-dimensional poverty through empowerment. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. Not just handouts, but empowerment. And the government says it is showing results. In the last 10 years, it is said to have uplifted 250 million people. The idea is to reduce poverty in every shape and form. Number 6, interest-free loans for the youth and housing for all. Listen to this. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. Highlight number 7, the government wants to make home buying more affordable. A new scheme is being launched soon.
It will focus on the middle class. In addition to this, the government says it will build 20 million houses under a central government scheme, and their construction will take 5 years. At least that is the plan. Highlight number 8. A big push is being made to promote solar energy through rooftop solarization, meaning installing solar panels on rooftops. The plan is to identify 1 crore houses for this. They will be given solar panels and 300 units of free power every month. How does it help? In 3 ways. It will reduce the load on power grids. It will enable transition to green energy and reduce your electricity bill at the same time. If implemented well, these ideas can be game changers. Highlight number 9, fiscal prudence. The government wants to borrow less and spend more. The fiscal deficit target has been set at 5.1%. How will the government balance the books? How will it get the money that it needs